So we have a beautiful presentation and we have a nice session today. It's very beautiful PPT, so it will keep you enchanted while we learn this topic. Okay. The topic is storytelling with data. So data, we deal with data day in, day out, right? We have lots of data in Excel sheet. We have lots of data in database. We have data in other modes, S3 buckets. We have data of files stored in our folders. And we have data in PowerPoints and so on. So lots of data that we deal with. Data-oriented organizations, now we call them. So every organization, they were earlier talking about applications. Now they are talking about, everyone is talking about data. Data has become suddenly very important. And it's instead of information age, we call it basically data-based age. Information itself is data. Google is based on data. Everyone is based on data. So there is this beautiful topic. The this studies or this book or this knowledge has been presented by Cole Nussbaumer Knaflick. It's a beautiful, difficult name to pronounce, but it's by Cole, and she's one of the part of the Google Analytics team. So she's part of Google, or she has been part of Google. So let's get into the topic. The idea is in this topic, we as always, we may not go into a lot many details because this topic means that you learn the skills of presenting the data in the right manner by choosing the right media, by choosing, by applying the principles of design, by removing the clutter and so on. So, but again, this session will give you a gist of how important data is and how important is to present it right. How important is to present it in a clean and neat fashion so that it tells a story, so that it leaves your audience happy and spellbound, and they live happily and they understand and leaves them with a decision making state, leaves them in a action based state. So we'll see some of the things today. We'll see uh, six major things basically. There are six major steps to cover this. One is I will just tell you the steps and then we can go into the topic one by one slowly. There is this importance of context. So we will begin with context. What is the context of data? And we will see what is the context. Then second step, we will see what does choosing an effective visual means. We will learn to choose an effective visual or the medium to present our data. Then we will see how to remove the clutter. Okay, how to clean up the data, how to remove the clutter. Then we will see how to focus the audience's attention, how to bring attention to where we want. We want people to see what we want them to see and not what they are seeing on their own. तो ऑडियंस को वो दिखना चाहिए जो आपको दिखाना है. That is the art of step 4. How to focus your audience's attention. And then at the fifth step, we will see how to think like a designer, how to apply design principles to your data, to your cleaned up graph or cleaned up data. And then at the sixth and final step, we will see how important it is to tell a story. So presenting your data like a storytelling. Those are the six major steps. Okay, now we will get into them slowly one by one. We'll see some examples also. You can see bad graphs are everywhere. So typically हम इतने सारे graphs देखते हैं. Some of us may have seen some graphs in Excel sheets mostly or in PowerPoints. So most of them are bad graphs. Most of them are not readable. Most of them are difficult to comprehend. Most of them are difficult to analyze. क्यों? क्योंकि lines, numbers, it's a mess of line numbers, colors, so many colors, right? They drive your attention to everywhere at the same time. And hence you are not able to tell a story. Hence you are not able to focus on certain things. Typically, most of the graphs you see are not
aligned well, not clearly presented well. So nobody sets out to make a bad graph. That's one thing to learn here. But it happens again and again. Why it happens? Because we don't spend time cleaning it up. Because we don't take the effort of learning this art of storytelling with data. जो आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा. We'll just see a brief level. So as I said, presentation 1 hour presentation may not give you a very in-depth knowledge of storytelling with data, but it will give you definitely some idea. And as usual, those who are interested to learn this art in a deeper fashion, they can definitely connect to me, or we can go over it, or you can also research on your own and learn. This art will help you to present your data better. And this will be applicable to almost all of you, because not only technical people deal with data, even non-technical folks have to deal with data. Even testing team has to deal with data. Even marketing team has to deal with data. Data is everyone's forte. Data is everyone's, let's say, bread and butter nowadays. So everyone has to deal with data. Even graphic designers, UI, UX, everyone deals with data. But the data may be of different kind, but you see data everywhere. So why we see bad graphs more? Because we just create a graph quickly in PowerPoint or in Excel sheet or in some other place, and we don't spend the rest of the effort to clean it up. Okay. Now another reason why we aren't good naturally at storytelling with data is that we aren't naturally good because we are not well versed with this art of storytelling. हम लोगों ने ये सीखा नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि डेटा को भी प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से, और डेटा शुड बी क्लीन्ड अप, और द डिफॉल्ट ग्राफ्स दैट इज फॉर्म डिफॉल्ट ग्राफ्स दैट इज created in these tools I mentioned, like Excel sheet, PowerPoint, and even other tools, need to be cleaned up. There are lots of features which can be explored. There is a lot of clutter that can be removed. There are lots of extra labels and text and information which are giving additional cognitive load to your brain. So they can be cleaned up. We aren't naturally good at storytelling. Hence this. Now, coming back to the point which I repeated in the first, there are 6 steps to it. First is understanding the context. Okay. Second is choosing a visual, correct visual. Third is removing the clutter. Fourth step is focusing the attention. Fifth is thinking like a designer. And sixth is storytelling. तो अभी वन बाय वन क्विकली हम देख लेते हैं. कॉन्टेक्स्ट पे क्या आता है? तो जब भी आपको डेटा क्लीन करना है, जब भी आपके पास ग्राफ है, जब भी आपको कुछ स्टोरी बताना है, जैसे अभी डेमो में कुछ हम करते हैं प्रेजेंट, राइट? हम कुछ अलग अलग इससे प्रेजेंट करते हैं. So whenever you want to present some information in terms of visual, or if you have a pie chart, or if you have a graph, or if you even just have a number to present, a big number, 30%, 40% automation, 50% automation, whatever is the number, whatever you are presenting, what can be done to it? You can apply these 6 steps. What is the first step? Understanding the context. What is the context? Context is very important. Context is basically who, what, and how. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि who means who is the audience. You have to think a minute about the audience. Who is going to listen to it? Is it the VPs of the company? Is it the support staff? Is it the external vendors? Is it the employees? Is it the freshers? Is it who? Who is it? Then what is it? You know, what is it that you're going to do? How are you going to tell the story? What do they want to listen? What do you need your audience to know or do? तो व्हाट के बारे में हम सोचते हैं कॉन्टेक्स्ट में, एंड देन हाउ इज द स्टोरी टेलिंग पार्ट. हाउ आर यू गोइंग टू कन्वे इंफॉर्मेशन. कौन सुनेगा आपका स्टोरी टेलिंग? किसको डेटा प्रेजेंट करना है? दैट इज हु. व्हाट डू दे वांट? व्हाट इज ऑडियंस इंटरेस्टेड इन? व्हाट डू दे वांट? व्हाट डू यू वांट देम टू डू? देन हाउ आर यू गोइंग टू कन्वे? हु, व्हाट, हाउ. द 3-minute स्टोरी एंड द बिग आइडिया. 3-minute स्टोरी क्या होता है? 3-minute स्टोरी को एलिवेटर पिच भी बोलते हैं. ठीक है, एलिवेटर पिच क्या होता है कि आप किसी के साथ बिल्डिंग में एलिवेटर में चढ़ गए, लिफ्ट में, और वो लिफ्ट जब तक नीचे आ गई तब तक आपने स्टोरी बता दिया उसको. इट्स अ 3-minute स्टोरी. इवन 3 minutes इज अ बिग नंबर. आज 3-minute स्टोरी भी यू कैन टेल इन मुंबई और प्लेसेस वेयर लिफ्ट्स आर इन स्काई स्क्रैपर्स. In India, you will hardly get a minute or 2 minutes, depending on the size of the building or the number of floors. But 3-minute story is a typical concept where you can tell the whole story in just 2 to 3 minutes. It's like a sales pitch.
telecalling sales team will understand. It's like the short sales pitch that you have to tell if the audience has very less time. ठीक है, तो 3 मिनट स्टोरी से क्या होगा? 3 मिनट स्टोरी से आपको जिस्ट पता लग जाएगा. The 3 minute story is if you only had 3 minutes, how to tell your audience what they need to know and how would you say it. That is working on your pitch, elevator pitch or elevator story. Then big idea. Big idea is what is the major chunk of your lesson. जैसे फर्स्ट वाले हमने एक्सरसाइज में देखा कि प्लीज अप्रूव द हायर of 2 engineers. That was the major big idea. Okay, they needed an approval. They needed 2 more support staff. The number of tickets processed was getting shorter and shorter, and received was so they were getting overloaded. So that was the big idea. What was the big idea in the second one? Survey, pre and post. What was the big idea in the third one? Interest in the product, a certain product. So you need to understand the big idea. You need to be able to tell the 3 minute story quickly. It helps you prepare for the detailed version. If you know the 3 minute story, you can detail it out. But if you don't know how to tell it in short, you will always need more time. Suppose audience leaves out after 10 minutes, then what will you do? Suppose you only have prepared your story so that you can tell it in 30 minutes minimum, then you may not be able to hold the attention for that. So you should be able to tell it in short. Then who, what, how, very important. Context is very, very important before understanding, basically before starting to present data. ठीक है, context समझ में आ गया? Let's go to the next tool. Choose appropriate tool. That is the second. तो क्या करते हैं इसमें कि आपको करेक्ट मीडियम चूज करना है. कुछ डेटा के लिए सिर्फ नंबर सफिशिएंट है, कुछ डेटा के लिए पाई चार्ट चाहिए, कुछ डेटा के लिए आपको लाइन ग्राफ लगेगा, कुछ डेटा के लिए जस्ट एक फोटो लगेगा, कुछ डेटा के लिए यू नीड लॉट ऑफ graphs, maybe 2 graphs or more than 1 graph, and some lot of, let's say, tabular data needs to be presented, which cannot be told like one number only. You have to have a graph. So you have to choose the right medium. You have to choose the right graph and right tool. Basically, इसमें दो चीजें आ जाती है, एक right tool and right type of graph. So some examples are given here. You can see lots of different examples are there that you can choose. There is a simple text. So if the number is too bold, like for example, automation example, so you can just present it like a big number, 91% automation done, or 71% automation done, or something like that. Simple text or simple number, bolded and loud. Then there is a lot of other visual mediums that can be used, which can be used to present the data. One is a tabular format. You can see there is a heat map. हीट मैप इज बेसिकली डेंसिटी वाइज वो दिखाता है. तो हीट मैप में देखो क्या होता है, लेफ्ट साइड पे कैटेगरी है, ऊपर पे कुछ उसके प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से, एंड देन विद द शेडिंग अमाउंट, द डार्कर द शेड, द मोर द डेंसिटी, द परसेंटेज इज मोर. लाइन ग्राफ, scatter plot is just dots. Then slope graph, it is another type of graph. Then there are lots of bar charts also, vertical bar chart, horizontal, stacked, and 100% stacked. Some advanced types in this also. But don't worry, don't need to use all of this in every storytelling that you do. You can even do away with simple things like simple text or a simple line graph or a simple table. Okay, these are some of the visuals that can be used for your medium. तो पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है ये पता करना है कि हमको जो उसको डेटा बताना है वो कौन है, and what are they interested in, and how to tell, and then how to convey. Then you have to choose the right medium, right visual medium, right tool to do it. What is the third step? Beautiful slide here. Eliminate clutter. ठीक है, क्लटर, हाउ क्लटर का हमने कुछ एग्जांपल देख लिया. अभी एक्सरसाइजेस हमने किए तो हमें पता चला कि कितना सारा क्लटर था. बिफोर देखा तो पता चलता नहीं है जल्दी. बिफोर देखा तो हमें लगता है हाँ ये ग्राफ भी क्लियर ही है, क्या प्रॉब्लम है, राइट? वी कैन रीड इट, बट यू नीड 10 minutes टू रीड इट बेसिकली. जो आफ्टर एग्जांपल है दैट यू नीड वेरी वेरी शॉर्ट टाइम टू रीड. All the after versions took less than half a minute maybe to understand the graph, but before versions you will need at least 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, depending on this thing, because of the clutter, because there is a lot of extra information, a lot of extra lines, a lot of big labels, a lot of legends and so on. You have to compare in the brain. So you are giving your audience a lot of work. If you have a lot of clutter in your graph, they will get bored, perhaps they will sleep, or worse, they will leave the session. So why clutter removing is important.
क्लटर इज योर एनिमी। क्लटर जितना है आपके डेटा में, आपके इंफॉर्मेशन में रिडंडेंसी है, डुप्लीकेशन है, you are definitely taking a chance there. You are playing with the audiences and your style. You are putting them under mental pressure to understand a lot of things. Why is clutter the enemy? Because everything you add on a, see, think of a white page. The very simple example I give to everyone on this is think of a white wall, whitewashed. पूरी क्लीन वॉल इमेजिन करो या वाइट पेज पूरा इमेजिन करो. उसको देख के ब्रेन को कैसा लगता है? सूदिंग लगता है. इट्स लाइक zen फीलिंग, मेडिटेटिव फीलिंग. यू लुक एट अ बिग व्हाइट वॉल और अ बिग व्हाइट शीट ऑफ पेपर which is empty, no lines, no dot. That is like a picture blank. Imagine a blank wall of page. That is clean, very less load or no load, let's say, for the brain, roughly. But then everything you add on that white paper, अब आपने एक डॉट लगाया, एक लाइन लगाया, एक वर्ड लगाया, कुछ लिखा, वो पेपर पे जो भी डालोगे, जो भी स्प्रिंकल करोगे, स्प्रे करोगे, है ना, स्कैटर गन चलाओगे, चार्ट बनाओगे, पेंटिंग करोगे, वो सारा का सारा कॉग्निटिव लोड ऐड होने वाला है ब्रेन पे, बिकॉज ब्रेन विल नीड टाइम टू प्रोसेस इट. So think of it like starting from a white page. So everything that is there on the page is going to add some cognitive load on the audience. This is a thing to keep in mind. बिकॉज हम क्लटर पे ध्यान देते नहीं है, हमें लगता है क्या होता है, राइट? हम कितना भी डुप्लीकेशन रखते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ डुप्लीकेशंस इन आवर थिंग्स, ऑल ऑफ अस डू, राइट? वी क्रिएट शीट्स, वी क्रिएट ग्राफ्स, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डुप्लीकेशन, वी नेवर केयर अबाउट इट, क्योंकि हमें ये पता नहीं है. वी आर पुटिंग अवर ऑडियंस इन द लॉट ऑफ प्रेशर. वी आर पुटिंग देम टू कंपल्सिव बोर्डम, डेफिनेटली. ठीक है. देन गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल परसेप्शन. देयर आर सम विजुअल परसेप्शन प्रिंसिपल्स कि कैसे हाईलाइट करना है, कैसे बोल्ड करना है, कैसे ऑडियंस का ध्यान लेकर जाना है वहां पे. देयर आर लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स. ठीक है. दैट हेल्प्स. एंड देन वाइट स्पेस यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज वाइट स्पेस इज कॉम्प्लीमेंट्री. कुछ लोगों को क्या लगता है, यूजे प्रोडक्टिविटी लगता है ना. सम पीपल मे बी अंडर द इंप्रेशन कि जितना वाइट स्पेस है उसको भर दो. खाली मत दिखाओ. ग्राफ बनाया है, नीचे खाली स्पेस है, कुछ तो डालो उसमें, ऐसे मत करो, लेजेंड डालो और कुछ तो कलर डालो और कुछ तो लिखो वहां पे. बट दैट इज द कॉन्ट्ररी टू द visual perception principle. White space is definitely required. It's complementary to your data. The more the white space, the more easier it is to read the information. ठीक है. देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ अलाइनमेंट. जैसे हमने अलाइनमेंट देखा, लेफ्ट अलाइन कर दिया और बाकी डेटा आपका लेफ्ट अलाइंड है और आपका जो टाइटल है, हेडिंग है, वो सेंटर अलाइंड है. दैट ऑल्सो टेक्स सम लोड फॉर द ब्रेन, बिकॉज ब्रेन एंड आईज हैव टू मूव अराउंड टू सी दैट डेटा. टिंग डिंग डिंग डिंग, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट आपको देखना पड़ता है. तो आईज पे लोड आता है, ब्रेन पे लोड आता है. इफ द डेटा इज सिमेट्रिकली अलाइंड, इट इज प्रोसेसेबल बाय ब्रेन इन वन शॉट. You can just read it like a F pattern. Okay, you can read it like a Z pattern. So it's very easy to do. If there is a lack of visual order, people need a lot of mental pressure to do it, to process it. Then there is something called as a data ink or signal to noise ratio. Signal to noise ratio क्या है, जो मैंने white page वाला example बताया, कि जितनी इंक है आपकी पेज पे, डेटा इंक रेशियो. डेटा इंक रेशियो इज हाउ मच इज द ब्लैंक स्पेस एंड हाउ मच इज द इंक यूज्ड. इंक मींस एनी इंफॉर्मेशन ऑन दैट वाइट ब्लैंक पेज. तो जितना डेटा है, जितनी वाइट स्पेस है, दैट रेशियो शुड बी गुड इनफ फॉर पीपल टू परसीव. नहीं तो पूरा पेज भर देंगे, सारे इस जगह पे डॉट लगा देंगे और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, वाइट स्पेस कुछ दिखेगा ही. ठीक है. तो क्लटर इज वेरी, रिमूविंग क्लटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Otherwise, they make our visuals more complicated than necessary. Okay, we are not getting into details of the Gestalt principles. There are a lot of Gestalt principles also. Okay, principle of enclosure, principle of similarity, and so on. उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कि चीजें पास हैं तो समझ में आती हैं, चीजें दूर हैं तो समझ में नहीं आती. देन एनक्लोजर. एनक्लोजर मतलब देयर आर, लेट्स से, 4x4 मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, एंड कुछ डॉट्स को एक चारों तरफ से बॉर्डर बनाया है, तो वो बॉर्डर वाले तुरंत दिखते हैं. So there are a lot of Gestalt principles. So those who are interested, we can go into that detail. But just understand, clutter, removing clutter is very, very important. We just leave it unattended mostly in our stories and in our presentations. Then fourth and very important, draw attention to where you want. ठीक है. Aesthetics and visual. तो कहाँ पे attention लेके जाना है? Thinking like a designer. You see with your brain.
देयर इज आइकॉनिक मेमोरी, देयर इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, देयर इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमने मेमोरी के ऊपर कुछ थोड़ा सा देखा था, मेमोरी के ऊपर हम और भी देखेंगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन द ब्रेन। आइकॉनिक मेमोरी इज एसोसिएटिव मेमोरी, कि आपको तुरंत देख के एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज से, पावर ऑफ एसोसिएशन, तुरंत याद आता है। यू सी द आइकॉन्स, यू सी द विजुअल आइकॉन्स एंड इट इमीडिएटली रिफ्लेक्ट्स इन योर ब्रेन, है ना, तुरंत समझ में आ जाता है, हाँ ये बराबर है। फोटो देखा तो समझ में आता है जल्दी, 99% एक्यूरेसी होता है उसमें। बट इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट मेमोरी, वेर इट्स वेरी पुअर एक्यूरेसी व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स। व्हाई? बिकॉज ब्रेन इज नॉट naturally inclined to learn textual information. Brain is more naturally wired to learn visual information. That is iconic memory or visual memory. ठीक है, विजुअल मेमोरी तुरंत याद रहता है, टेक्सचुअल मेमोरी आपको बहुत टाइम लगता है। You see with your brain, not with your eyes. Eyes are merely windows. You see with your brain what is the picture drawn inside the brain, that you see. Then how to focus the audience's attention? Now there are some pre-attentive attributes like size, color, and position. So ये very important है, useful for the graphic people, useful for others also, those who are going to present. There is something called as a pre-attentive attributes. Pre-attentive attributes क्या होता है कि आप साइज बढ़ा देते हैं। आपने एक लाइन लिखा है, ये सबने नोटिस किया होगा कि हम कभी मेल लिखते हैं या मेल हमने देखे होंगे, मेल में भी होता है, यू राइटिंग अ लॉन्ग मेल और एक मेल आता है आपके पास, बट वन लाइन इज बोल्डेड आउट, है ना, या लास्ट जो पंच लाइन है मेल का उसको बोल्ड कर दिया है, लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन और एनी अदर लाइन इज बीन बोल्डेड और इटैलिक्स और कलर इज चेंज। सो दैट इज व्हाट, दैट इज प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स। तुरंत वहां पे ध्यान जाता है। हमने ग्राफ में नोटिस किया कि ब्लू शेडिंग, more shading is used on the right and less shading is used on the left. So what you felt? You felt your attention automatically going to the right side. आपको तुरंत राइट वाले पे ध्यान गया, क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा ब्लू किया है, ज्यादा डार्कर शेड किया है। तो इस तरह से हम साइज यूज कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं, और पेज पे पोजीशन समझो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आपने लास्ट में रखी है पेज। तो कोई ऊपर का पढ़ लिया किसी ने 2 लाइन और नीचे का पढ़ा ही नहीं, तो आपका मेन पॉइंट इज नॉट गेटिंग नोटिस, तो उसको ऊपर रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को ऊपर रखते हैं, साइज को यूज करते हैं, कलर को यूज करते हैं। देखो जर्नलिज्म में क्या होता है ना, जर्नलिज्म की एक थ्योरी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह बनते हैं, मैगजीन्स बनते हैं, तो उसमें हेडलाइंस होते हैं, हमें पता है। तो न्यूज़पेपर्स हम कोई पढ़ता होगा, आई डोंट रीड जनरली, बट देन आई गिव यू द आइडिया। तो इन जर्नलिज्म थ्योरी व्हाट दे डू, योर हेडलाइन शुड स्पीक ऑफ इटसेल्फ। तो सबसे पहले हेडलाइन स्किम कर लेते हैं लोग, फट 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 देख लेते हैं, और फिर अच्छा लगा कोई हेडलाइन तो उसके नीचे का एक लाइन पढ़ते हैं, फिर अगर वो लाइन अच्छा लगा तो उसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, और अगर बहुत अच्छा लगा तो फिर दूसरा पैराग्राफ, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा तो पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। बिकॉज नो वन हैज टाइम, दैट इज यूजिंग द पावर ऑफ मिनिमलिज्म और अलाउइंग द ऑडियंस टू लीव अर्ली, है ना। दिस हैपेंड, बस वो हेडलाइन में बता दिया, मोस्ट ऑफ द यूजर्स विल बी सेटिस्फाइड विद दैट, हाँ ये हो गया, चलो चलो आगे बढ़ो, ये हो गया, चलो आगे बढ़ो। हेडिंग से ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। अगर हेडिंग अच्छा लग रहा है तो नीचे का, उसके नीचे अच्छा लग रहा है तो और उसके बाद पढ़ते हैं। दिस इज द पावर ऑफ प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स। तो वो पहले से ही आपको समराइज्ड व्यू दिखाते हैं। जैसे पोजीशन ऑन पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट समराइज्ड लाइन एंड देन यू डिटेल इट आउट फर्दर। ठीक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विजुअल हायरार्की। विजुअल हायरार्की में क्या होता है? विजुअल हायरार्की जैसे मैंने बताया, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है कि करेक्टली प्लेसमेंट, यूजिंग सिमेट्री, यूजिंग वाइट स्पेस, यूजिंग लेस कलर्स, डोंट यूज कलर्स अनलेस नीडेड, फेड आउट, यूज फेडेड आउट कलर्स वेयर यू डोंट वांट ऑडियंस टू लुक। फॉर एग्जांपल हमने ग्राफ्स में नोटिस किया होगा, ग्रे यूज किया है बहुत सारे ग्राफ्स में, आफ्टर एग्जांपल्स में दे हैव टिपिकली रिप्लेस्ड, they just took one prominent shade in the previous examples and rest, जहां पे डेटा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे उन्होंने ग्रे किया है। क्यों ग्रे किया है? क्योंकि ग्रे पे ध्यान नहीं जाता है, ग्रे फेड्स अवे इनटू द बैकग्राउंड। टिपिकली इट्स द बैकग्राउंड कलर, हमें पता है ग्रे। माइंड आपका ब्रेन कैसे रीड करता है उसको? बैकग्राउंड की तरह रीड करता है। तो अगर आपने ग्रे इन्फॉर्मेशन डाला है कुछ, तो माइंड जल्दी वहां पे जाएगा नहीं। तो दैट हेल्प्स यू टू ब्रिंग अदर एलिमेंट्स आउट, है ना। सब ग्रे कर देंगे ऐसा नहीं है, बट जहां ध्यान देना है वहां ब्लू करेंगे या रेड करेंगे या कोई प्रोमिनेंट कलर करेंगे, और ग्रे वो करेंगे जो फेड आउट करना है आपको।
So all of these applied together is a visual hierarchy. Then designing with color blind in mind. There are people with color blind having green and red का perception होता नहीं है कई सारे लोग. So they typically you should choose जो पहले तो कलर्स कम यूज कर रहे हैं बट जो कलर्स यूज किए हैं प्रोमिनेंस के लिए उनको भी ऐसा कलर यूज करना है लाइक यू सी एग्जांपल ओनली ब्लू वाज यूज्ड मोस्टली इन द प्रीवियस आफ्टर एग्जांपल्स ब्लू इज अ कलर दैट फिट्स बेटर टू द कलर ब्लाइंड पीपल ठीक है आल्सो देन फॉलो जेड पैटर्न जैसे मैंने बताया कि जेड पैटर्न होता है एफ पैटर्न होता है तो हम कोई पेज पढ़ते हैं तो देखो ये स्लाइड पे देखो इन्फॉर्मेशन फोकस योर अटेंशन फर्स्ट बुलेट सेकंड बुलेट दिस इज लाइक अ एफ इफ यू नोटिस लाइक अ एफ पैटर्न ऊपर से राइट जा रहा है देन आप नीचे जाओगे टक देन एक छोटा डंडा राइट एंड द राइट जस्ट इमेजिन अ एफ लाइंस बिलो एंड it's following the F pattern. Z pattern is Facebook page, very famous example. When you go to facebook.com, it's visually designed in a Z pattern. Okay, maybe you can try it out. Some of you can try it out after go to the facebook.com after the session whenever you have time and see the visual hierarchy. देखो Z pattern दिखता है कि नहीं ठीक है तो Z पैटर्न F पैटर्न टिपिकली हमारे ब्रेन इस तरह से पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन तो ये पैटर्न यूज किया तो जल्दी से वो समझ में आता है दिस इज हाउ टू ब्रिंग योर ऑडियंसेस फोकस टू समथिंग ठीक है तो वी सॉ व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप जब भी कोई डेटा बना रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट हु इज गोइंग टू सी इट व्हाट आर दे इंटरेस्टेड इन एंड हाउ आर यू गोइंग टू से देन वी सॉ विच विजुअल मीडियम टू चूज कौन सा ग्राफ करेक्ट है हर ग्राफ का एक अलग इंपॉर्टेंस है हर विजुअल and which tool to use. Then you saw the importance of removing the clutter. And fourth, we saw how to focus the audience's attention. Now let's see the fifth one. It is like this is more applying the design principles. Design principles में क्या आता है? Actually इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं graphics. But most of us, for us to know, some basic ideas are given here. So form follows function. Very important. Form follows function. इसका क्या मतलब होता है? ग्राफ बाद में आता है फंक्शन पहले आता है फॉर्म फॉलोज फंक्शन फंक्शन क्या है पहले है ना जैसे हमने देखा कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले बोलना क्या है बिग आइडिया क्या है हु इज गोइंग टू सी योर ग्राफ हु इज गोइंग टू रीड योर स्टोरी तो पहले वो आता है उसके ऊपर से ग्राफ बनता है उसके ऊपर से फॉर्म वैसा चूज करोगे आप सो फॉर्म फॉलोज फंक्शन नॉट अदरवाइज नहीं तो हम क्या करते हैं एक डिफॉल्ट ग्राफ बना देते हैं और सबको दिखाएंगे भाई राइट तो ऑडियंस क्या है कॉन्सेप्ट क्या है बिग आइडिया क्या है अकॉर्डिंगली फिर आप चूज करते हो फॉर्म बाद में चूज करते हो फॉर्म इज द टाइप ऑफ ग्राफ फॉर एग्जाम्पल फंक्शन इज व्हाट इज द आइडिया सो फॉर्म फॉलोज फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट देन देयर इज affordances accessibility and aesthetics quite a mouthful I'll quickly explain affordances मतलब easily जो दिमाग को समझ में आता है जैसे हमने यूजेबिलिटी सेशन देखा था तो अंडरलाइन का एग्जांपल लेते हैं है ना देयर इज अ हाइपरलिंक तो हाइपरलिंक हम सबको पता है कैसा दिखता है एक ब्लू कलर होता है स्टैंडर्ड एक अंडरलाइन होता है और एक स्पेसिफिक फॉन्ट होता है अब अगर हाइपरलिंक आपको दिखाना है और आप उसको कुछ और ग्रे कलर दे रहे हो रेड कलर दे रहे हो और अंडरलाइन हटा दिया और बोल्ड कर दिया तो कैसा होता है ना वो जल्दी से समझ में नहीं आएगा कि ये हाइपरलिंक है भी कि नहीं है क्लिक करने के बाद मालूम पड़ेगा या होवर करोगे तो पता चलेगा सो दैट इज वी आर प्लेइंग विद द अफोर्डेंसेस तो जो ऑडियंस को अफोर्ड है ऑलरेडी अफोर्डेड है audience have a place in the brain to understand that there is some basic principle you are violating that is not following the affordances audience need to be able to afford it quickly affordances that's just a technical word for it then accessibility हमें पता है accessibility is for let's say not just color blind people but people who have limited perception blind people or handicapped people or people who are deaf and so on who have accessibility problems is your story or is your website or is your graph going to be in some way accessible to them think of that you need to be able to consider that then aesthetics हम पूरा देख रहे हैं aesthetics is being a designer aesthetics is thinking like a designer aesthetics में सब आ गया visual hierarchy आ गया font आ गया family आ गया colors आ गया clarity आ गया aesthetics is basically the beauty the clarity of your picture the clarity of your story the clarity of your graph then highlight important stuff ये हमने देख लिया ऑलरेडी इंपॉर्टेंट स्टफ शुड बी हाईलाइटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट स्टफ शुड बी फेडेड आउट ये कोई बताता नहीं हम आधा ही सुनते हैं राइट हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट चलो पूरा ऐसे लिखा है किसी ने ब्लू कलर में लिखा है
तो हाईलाइट करेगा तो चलो डार्क ब्लू कर दिया एक लाइन को, या एक जो जो इंपॉर्टेंट करना है, लेकिन जो बाकी का था उसको भी ग्रे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू मेक इट स्टैंड, देखो ब्लैक बोर्ड होता है तो व्हाइट चौक से लिखते हैं ना, अगर बोर्ड भी ब्लैक नहीं होगा, समझो चलो कोई बोलेगा ब्लू बोर्ड पे भी लिखते हैं, ग्रीन पे भी लिखते हैं, दैट इज ओके, बट विजिबिलिटी कम होती जाएगी। द डिफरेंस जितना कम होगा ना, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का जो कलर है आपका, बैकग्राउंड कलर एंड द टेक्स्ट कलर, उसके बीच में जो कॉम्प्लीमेंट है, उसके बीच में जो कॉम्प्लीमेंटिंग डिस्टेंस है, वो जितना कम होगा उतना रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। ये देखो रेड स्लाइड है, ऑरेंज स्लाइड है, ये ब्यूटीफुल, उस पर व्हाइट यूज किया है, क्यों? क्योंकि तुरंत दिखना चाहिए। तो हाईलाइट इंपॉर्टेंट स्टफ एंड फेड आउट द अदर स्टफ, देन एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। टेक्स्ट इज योर फ्रेंड, वाई टेक्स्ट इज योर फ्रेंड? तो पीछे ग्राफ पे हमने देखा कि कुछ टेक्स्ट ऐड किया, कितना हेल्पफुल हो गया उससे स्टोरी, पूरा स्टोरी पता चल गया ना। पहले बिफोर का देखा तो कुछ समझ में नहीं आया, ये जस्ट वॉल्यूम ऑफ टिकट्स प्रोसेस्ड, चलो भाई ठीक है, ओके, क्या करें फिर उसका क्या करें इसको, है ना? देन टेक्स्ट इज योर फ्रेंड, सो यू एडेड सम टेक्स्ट, प्लीज अप्रूव द हायर, और वी आर अनेबल टू कोप अप विद द टिकट्स। तो ये कुछ आपने टेक्स्ट, रिलेवेंट टेक्स्ट सही जगह पे डाला, यूजिंग द विजुअल हायरार्की, एवरीथिंग, देन इट मेक्स योर स्टोरी अ लॉट लाउडर एंड बोल्डर। तुरंत ऑडियंस को पता चलता है कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं। सो टेक्स्ट appropriately should be used wherever. Don't make it clutter, but it should be minimalistic, but it should explain the story and use smartly. Then be smart with color. Be smart with color का भी मैंने थोड़ा सा बता दिया. Be smart with color. The only general rule is don't use too many colors unless needed. Just use minimal colors and fade out the rest of the colors. So where you want the information to be focused, highlight that. Rest of the colors you can be using dull colors, for example. And the difference of foreground and background should be more so that readability improves. That is thinking like a designer. There are a lot of detailed design principles, but हम detail में नहीं, हम high level पे just देख रहे हैं कि कैसे, how each of us can also think like a designer. When creating a story, when creating a graph, creating a PPT, you can think like a designer. And sixth and the last point maybe is to tell a story. तो देखो बोरिंग ग्राफ कोई देखता नहीं है, और डायरेक्ट टेक्स्ट जैसे मैंने बताया कि किसी को याद रहता नहीं है। द ओनली थिंग वी रिमेंबर इज पिक्चर्स, द ओनली थिंग वी रिमेंबर इज म्यूजिक। म्यूजिक से प्रोज आता है, म्यूजिक सॉरी पोइट्री आता है, और पोइट्री से राइम्स आता है, ये सब कनेक्टेड है, हमें पता है ना। म्यूजिक हमें कैसे, 1 is bun, 2 is shoe, 3 is tree, 4 is door, so and so। तो बच्चों को हम ऐसे सिखाते हैं ना। क्यों सिखाते हैं ऐसे? क्योंकि वो याद रहता है, राइमिंग ब्रेन को याद रहता है। म्यूजिक हेल्प्स यू टू रिमेंबर, साउंड हेल्प्स यू टू रिमेंबर। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है ना, स्टोरी टेलिंग हमें याद रहता है, स्टोरी क्रिएट्स पिक्चर्स इन योर ब्रेन, इसीलिए स्टोरी टेलिंग। तो अगर किसी को कुछ प्रेजेंट करना है तो ही वुड लाइक टू, ही शुड प्रेजेंट इट लाइक अ स्टोरी, ब्रिंग अ स्टोरी इनटू इट, है ना, ब्रिंग अ स्टोरी एंड नॉट जस्ट वन पिक्चर थिंग और नॉट जस्ट अ वन ग्राफ। कैसे करते हैं स्टोरी? स्टोरी में देखो क्या होता है, हमने बहुत सारी हमने मूवीज देखी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज लिटिल रेड राइडिंग हुड, देयर इज सिंड्रेला, देयर इज पपाई, देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल फोक स्टोरीज, चिल्ड्रन स्टोरीज, बहुत सारे स्टोरीज से हम वाकिफ है ऑलरेडी। मूवीज भी देखते हैं, हॉलीवुड में भी है, बॉलीवुड में भी है, और भी है। द आइडिया इज, देखो स्टोरी में क्या होता है, एक बिगनिंग होता है प्लॉट, एक मिडिल होता है ट्विस्ट, और एक एंड होता है बैलेंस। एट हाई लेवल there is three things in a story. There is a beginning, which starts out well, then there is a twist in the middle, something goes out of balance, and there is the end। ठीक है? और क्या होता है स्टोरी में? स्टोरी में एक हीरो होता है एक हीरो होता है, एक प्रोटेगनिस्ट होता है, जो स्टार्ट्स आउट राइट अगेन, बीच में ट्विस्ट आता है उसके लाइफ में कुछ तो, और फिर वो ट्विस्ट ठीक होता है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये तीन पार्ट्स में स्टोरी जनरली आ जाता है। तो बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है, एंड होता है। तो आपके स्टोरी में भी, हम स्टोरी टेलिंग में भी ऐसा कर सकते हैं। टाइटल ही स्टोरी टेलिंग है, देखो प्रेजेंटेशन का, स्टोरी टेलिंग विद डेटा, नॉट प्रेजेंटिंग डेटा बट स्टोरी टेलिंग विद डेटा। व्हाई स्टोरी टेलिंग? बिकॉज ऑडियंस आर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बोरिंग टेक्स्ट्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन reciting just lines after lines or even images after images. They need to be told a story. Images भी अगर random दिखाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 images दिखा दिए ऑडियंस को, बोला अब अभी क्या करेंगे? तो you should tell it like a story so that it is enchanting for them, so that audience is the hero, audience is the protagonist of your story।
Audience need to find them out of balance, and then audience will come back to balance based on your story. They will take an action in the end. Like the first graph, please approve the hire of 2 FTEs. That is the decision making that you want to expect from the audience, from the business whom you were presenting. So they are the hero. But वो एक starts out right, then there is a twist, and then you bring it to the happily ever after. ठीक है, पावर ऑफ रिपीटेशन. पावर ऑफ रिपीटेशन हम सबको पता है कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे 7 सेकंड 7 मिनट के लिए इंफॉर्मेशन रहती है और फिर हम भूल जाते हैं. तो पावर ऑफ रिपीटेशन हमें पता है, हम दोबारा उसको पढ़ते हैं, समराइज करते हैं, याद करते हैं. मैं सेशंस में आपको पता है आई विल ट्राई टू जनरली पुट अ समरी अक्रॉस. देयर विल बी अ समरी स्लाइड और समटाइम्स आई विल गो बैक टू द स्लाइड्स एंड शो यू सम समरी. क्यों? क्योंकि रिपीटेशन से ड्रिल्स डाउन बेटर इनटू योर ब्रेन. अदरवाइज वी फॉरगेट क्विकली. ये 7वें स्लाइड पे है तो छठे में क्या बताया वो भूल जाएंगे. तो रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट, ब्रेन को याद रखने में आसानी होता है. ठीक है, द नैरेटिव फ्लो एंड टैक्टिक्स. टैक्टिक्स आर द सेम थिंग. यू यूज अ वर्टिकल फ्लो, यू यूज अ हॉरिजॉन्टल फ्लो. किसी में समरी स्लाइड पहले भी आ जाता है, जैसे आज हमने उल्टा किया. वी डिड सम एक्सरसाइजेस and we did, then we are learning the topic, so it helps you to understand more. So there are lots of tactics in this also. Then there is big bang bongo. Big bang bongo is a technique, very simple. It's like you show them with a big idea कि क्या करना है, 1 2 3 4. ऑडियंस को समरी पहले दिखा दिया कि ये एक्शन है हमारा, ये डिसीजन मेकिंग होना है, और फिर पूरा स्लाइड चलेगा बीच में, 1 2 3 4 5 स्टोरी चलेगी, ऑल द स्लाइड्स. एंड देन bongo. bongo is again ओके, फिर से ये करना है, यानी आई नीड 1 2 3 4. चलो अभी स्टोरी देखते हैं पूरा, और फिर लास्ट में फिर से समरी, आई नीड 1 2 3 4. दिस इज काइंड ऑफ रिपीटेशन. सो बिग बैंग bongo, उसको जस्ट नाम दिया है फनी. It's a way to present the information. You summarize the information more times, in the start, in the end, both places. ठीक है, that is big bang. Lessons in storytelling. So with that we have storytelling, and then we'll just sum it up quickly. Then there is a visualization culture. कि कैसे हम इसको अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप्स में क्या क्या आता है, यू लर्न योर टूल्स वेल. तो जिनको अगर ये सीखना है, या जिनको लगता है कि ये अच्छा है, या इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं, या इससे हमें कुछ मिलेगा, तो उसको अडेप्ट कैसे कर सकते हैं. यू नीड टू बी एबल टू लर्न योर टूल्स. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेल में ग्राफ बनाना है, और कोई बोलेगा मुझे एक्सेल में आता ही नहीं है ग्राफ बनाना, तो पहले सीखना पड़ेगा ना. अगर उसमें लेजेंड चेंज करना है या ग्रिड लाइंस हटाना है, तो आपको देखना पड़ेगा ना कैसे हटाना है ना. यू नीड टू सी कि अगर लेजेंड हटा के मेरे को टाइटल के लाइन के ऊपर ही देना है नंबर, तो वो भी देखना पड़ेगा. तो यू नीड टू बी एबल टू लर्न योर टूल्स वेल. अगर पावर पॉइंट में बना रहे हो, या एक्सेल में बना रहे हो, या टैब्लू में बना रहे हो, या कहीं पे भी बना रहे हो, किसी भी रिपोर्टिंग टूल में बना रहे हो, यू नीड टू बी एबल टू लर्न द टूल, at least become familiar with some basic features of the tool. That will help you to change your information. Otherwise क्या होगा, blindly जो ग्राफ बनेगा हम उसको छोड़ देंगे और वही सबको दिखाएंगे. So that doesn't give a impact like we saw today. ठीक है, then iterate and seek feedback. ये तो हमें पता है, जनरल चीजों में भी है कि you iterate, basically you make a version. कोई बोलेगा एक बार में नहीं बनेगा, that is true. You take a graph and then you aim to improvise it. आप थोड़ा 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 उसको करेंगे, इटरेशन करेंगे. देयर मे बी मोर देन वन इटरेशंस रिक्वायर्ड, जैसे बाकी चीजों में भी लगते हैं. स्क्रीन सम करते हैं, ऐप करते हैं, सब करते हैं, तो इटरेशंस लगते हैं ना. तो इटरेशंस होता है, और फिर भी सीक फीडबैक इन डेमोज, इन कॉल्स, राइट. वी शो टू रेस्पेक्टिव टीम मेंबर्स एंड वी सीक फीडबैक कि बताओ भैया ये अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, और फिर उसको इम्प्रूव करते जाते हैं. And one fine day, your version is very nice compared to the sixth version. Compared to the first, sixth version is very nice with a lot of attention. ठीक है, then devote time. Most important, time देना जरूरी है, क्योंकि अपने आप मैजिक स्किल कुछ आएगा नहीं. तो अगर आपको स्टोरी टेलिंग सीखना है, या डेटा प्रेजेंटिंग सीखना है, या कोई भी और स्किल सीखना है, सो वी ऑल नो वेरी वेल दैट वी नीड टू डिवोट टाइम. तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. इसको भी टाइम देना पड़ता है. अगर आपको स्टोरी टेलिंग करना है, तो थोड़ा सा यू विल हैव टू लुक एट योर ग्राफ अगेन एंड अगेन कि मैंने ये बनाया है, अब इस पे मैं ये क्या कर सकता हूँ, क्या क्लटर है इसमें अभी भी, है ना. एम आई थिंकिंग लाइक अ डिजाइनर, इज देयर अ लॉट ऑफ, हैव आई अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट, एंड देन अपस्किल एवरीवन लाइक वी आर डूइंग नाउ. सबको सिखाओ, सबको ट्रेन करो, सबको बताओ. You should, then people will be able to
help you better because there will be an upskilled team. कोई एक ही बंदा देखो अगर मास्टर है किसी चीज का, एसएमई है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, तो उसका वो पोजीशन बना के बैठता है एंड देन हर एक बंदा उसके आगे, बैंक में देखते हैं हम, कोई मैनेजर है तो लाइन रहता है उसके कुर्सी के आगे और सब लोग लाइन में खड़े हैं क्योंकि वो एक ही मैनेजर है या एक ही उसका साइन चलता है। तो कंपनीज में हम ऐसा कल्चर नहीं रखते हैं, है ना। वी आर नॉट living with a bureaucratic culture, not nor other companies want to live by this culture. The new mantra is upskill everyone. तो आप सबको सिखाओ, सबको बताओ, है ना, so that people are also going to help you and we will overall we will have an empowered team and it will not be a one person doing the graph. For example, अगर in this skill that we talk about today, storytelling, अगर आपने सबको ये skill सिखाया and let's say 10 people are learning it, then you can show your improvements to those team members. They may be able to judge better than you, or you may get a different eyeballs looking at them. So you may get new types of feedback. Upskilling everyone is also a very good skill. Okay. So with this we can sum up. I thank you all again, once again, for the beautiful patience that you showed.